Okay, so good evening, all of you. Good evening, Nehal. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Please comment in the comment box that my voice is clearly audible to all of you and the screen as well. Okay, that's great. So in today's lecture, we are going to discuss some of the important MCQs, important questions in detail for your upcoming NTA UGC NET examination on the ninth unit, that is People Development and Environment, right? So we have already done. Before I'm starting, you are telling me voice is low. Okay, so today is your Maha Marathon session on ninth unit People Development and Environment, on which we will discuss some of the important MCQs, right? That will help you to maximize your marks in the NTA UGC NET examination, right? So without getting late, we will proceed for the questions. Okay? The people who are watching this video for the first time, I want to tell you that the question will be appearing on your screen, and I'll explain you the question, what kind of question is this, and the options, and then your responsibility is to tell me or comment in the comment box that which option is correct as per your opinion, right? So at the end of the session, we will be knowing that how much score you have earned in this session, right? So what you need to do, you need to do, if your answers, right, if you have given 20 questions correctly, you need to do 20 into 2 is equal to 40 marks, right? So you have earned 40 marks, correct? If you have given 10 questions answers correctly, then 10 into 2 is equal to 20 marks, right? So whatever the score you earn, that you need to share in the comment box, correct? That's it. Just give me 1 minute. Okay, so this is the first question on your screen. In what period of time the UN member states aimed to achieve their Millennium Development Goals? Right? We have discussed Millennium Development Goal. What are the goals of MDG? Right? So there are 8 goals we already know, but these 8 goals are uh, aimed to achieve through the UN members. So how many UN members are there? There whom, और वी कैन से, जिनका जो टारगेट है ना, टारगेट ईयर है, वो पर्टिकुलर टारगेट ईयर है, वो ऑप्शंस में आपको बताना है, ठीक है? वो 1995 से लेके 2010 तक है, 2015 से लेके प्रेजेंट तक है, या फिर 2000 से लेके 2015 तक है, या फिर 1990 से लेके 2005 तक है. दैट मीन्स क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, राइट? सो यूएन मेंबर्स जो है इसमें कितने हैं हम बताएंगे, उसी के साथ जो अचीवमेंट या फिर हम टारगेट ईयर भी बोल सकते हैं वो है, वो हमें बताना है, राइट? So this is the countdown you can see here. Okay, so right answer is option C, that is 2002 2050. Okay, see, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसे हम MDG कहते हैं शॉर्ट्स में,
are the 8 goals set up by the 189 UN member states in September 2000, right, and agreed to be achieved by 2015. ठीक है, so September 2000 is the starting date and 2015 is called target year, right? So by 2015 these 8 goals need to be achieved. These all targets within the 8 goals need to be achieved, right? The sustainable development goal जिसे SDG हम short में कहते हैं, that SDG succeeded the MDGs in 2016. okay, that means 2016 में जो MDG जब एंड हुआ, MDG जब खत्म हुआ, तब SDG ने उसे टेक ओवर कर लिया, उसे सक्सीड कर लिया विथ न्यू गोल्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Which of the following are millennium development goals, right? So 8 goals are there. Among 8 goals, which of the following है ना are the MDGs? Eradicate extreme poverty and hunger, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, affordable and clean energy, combat HIV, AIDS, malaria, other diseases, and clean water and sanitation. So, among these 6 goals, how many of these 6 goals are the goals of MD? Right, that means Millennium Development Goals. Okay, so यहाँ पे चार चार ऑप्शंस है, ABCD है, BDEF है, ABCE है, या फिर CDEF है. अगर इसमें अगर आपको एक भी है ना, एक भी ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि वो MDG का गोल नहीं है, तो आपका ये आंसर बहुत सही से आ सकता है, 1 या 2 अगर आपको पता होगा तो, है ना. इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये तो गोल है ना, ये गोल तो है ही MDG में, राइट. तो ए तो होना चाहिए किसी भी ऑप्शन में, तो इसमें ए है तो ये बच जाता है, इसमें ए है नहीं है, इसमें ए है ये भी बच जाता है ना. तो इस दोनों में से कुछ तो होना चाहिए, करेक्ट. दूसरा देखो, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर विमेन, ये है ना. तो ये भी यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे बी है बट ए नहीं है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो दूसरी टाइम भी ये सेलेक्ट होता है. रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये है ऑप्शन सी है ना. तो सी भी रहेगा, तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है. चलो ठीक है. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कॉम्बेट HIV, एड्स, मलेरिया डिजीज, तो ई भी है ना. ई है, तो इसमें ए ऑप्शन में ई है नहीं है, तो ये भी क्या है, बचा कौन, ये. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप ये जो आंसर है वो एग्जाम में दे सकते हैं. ठीक है. So these are the 8 goals, total 8 goals of MDG. First is eradicate extreme poverty and hunger. Secondly, achieve universal and primary education. And the next is promote gender equality and empower women. Next is child mortality, reduce child mortality, and then improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases, ensure environmental sustainability, develop a global partnership for development. So these 8 goals are there, which needs to be, which are needed to be succeeded or achieved by 2015, right? Next question. Which one of the following was not a Millennium Development Goal? That means MDG. So previous question was asking about the which of the following are the goals of MDG, and this question is asking about the which of the following is not the goal of MDG, right? So दोनों भी तरह से पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में. We need to prepare from both the aspects, right? Good health and well-being, then eradicate extreme poverty and hunger, improve maternal health, reduce child mortality. So which of the following is not the Millennium Development Goal? चलो बताओ फटाफट. Okay.
So right answer is option A, that is good health and well-being. Okay, so these all are goal of MDGs, right? ये सारे MDG के गोल हैं, और ये जो है ये है SDG का गोल। ठीक है, चलो, which of the following was not an issue to be addressed under Millennium Development Goals, right? So these all are targets, these all are goals, right, that need to be achieved by 2015, right? I'm talking about the Millennium Development Goals. So according to these 8 goals, which of the following issue is not there, which is not considered in the Millennium Development Goal, right? Eradicate poverty, primary education, environmental sustainability and human rights। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आए तो, वरना बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है अगर आपको समझ में नहीं आए तो। चलो आंसर दे दो फटाफट। ओके, सो ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई भी एक गोल या फिर टारगेट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं है, राइट? हाउ मेनी कंट्रीज मेड द प्रॉमिस टू कमिट टू द MDGs? ठीक है, MDGs को अचीव करने के लिए कितने UN मेंबर्स हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 2000, 150, 189 एंड 100। चलो बताओ। Okay, so right answer is option C. 189 members were there, and 189 members combinedly decided these goals and to be achieved by 2015, right? The Agenda 2020, Agenda 21 of Rio Summit 1992 is related to MDG, SDG, then prevent the emissions and environmental education. So Agenda 21 is about what? MDG, SDG, prevent emission or environmental education? Countdown has started. चलो, so right answer is option B, that is SDG। ठीक है, Agenda 21 is non-binding action plan of United Nations with regard to sustainable development। ठीक है, it was the product of a summit held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992। Agenda 21 is comprehensive plan of action to be taken globally, nationally and locally by organizations of United Nations systems, governments and major groups in every area in which human impacts on environment. Okay, so any area where humans are impacting the environment, there all these government, local bodies and groups, major groups, United Nations systems, right, national, global, local level organizations, that they all should take initiative, take action, right? Comprehensive plan of action to be taken, right, through these all the institutions, or we can say bodies. So that is about Agenda 21. I hope you all understood.
व्हेन वॉज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये टर्म कब आया ये पूछा है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब से स्टार्ट हुआ ये नहीं पूछा है, ये टर्म कब आया था ये पूछा है। चलो 10 सेकेंड्स का काउंटडाउन शुरू 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 कर दिया है। Okay, so 1987 is the correct answer. Okay, chalo. 1987 United Nations World Commission on Environment and Development released the report Our Common Future, commonly called a Brundtland Report. Need to be remember. Okay. Next is the SDG were developed in post 2015, that we all know. Development Agenda as the future global development framework to succeed MDGs, which ended in 2015. Okay. Next, which of the following is not a sustainable development goal? अब तक तो MDG के बारे में देख रहे थे, अभी देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। सो इसमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, ऐसा पूछा है ना। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर गोल्स, लाइफ बिलो वाटर एंड कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। इसका आंसर तो पक्का आना चाहिए सबको। चलो फटाफट बताओ आंसर। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। ये तो किसका गोल है, ये तो MDG का गोल है ना। ये सारे किसके गोल हैं, ये SDG के गोल हैं, बराबर। तो SDG के गोल पूछे हैं, MDG का सॉरी SDG का गोल नहीं है ऐसा पूछा है ना। तो ये जो गोल है वो किसका है, ये MDG का गोल है, तो दैट मीन्स SDG का गोल नहीं है, बराबर। SDG के गोल्स कौन से हैं, ये सारे SDG के गोल्स हैं, ठीक है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, then affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities. The next is sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate change, climate action, life below water, life on land, peace, justice, and strong institution, and lastly, partnership for the goals. Network issue. What is happening? Is this issue happening with all of you? Okay. So next question is: Sustainable development goals are targeted to be achieved by which year? Okay. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका टारगेट क्या है, कब तक अचीव करना है। जैसे MDG का टारगेट है 2015, है ना। MDG, वैसे SDG का क्या है, करेक्ट बताओ। रोक रोक क्या आ रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका।
Okay, so right answer is option C, that is 2030. Okay, so 2030 is the correct answer. तो 2030 में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, टोटल 17 गोल्स that needs to be achieved by this year. Which of the following are SDGs? फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा SDG है? रिड्यूस इनइक्वालिटीज, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, industry innovation and infrastructure, reduce child mortality, decent work and economic growth, clean water and sanitation. बताओ. Okay, so right answer is option C, that is ACEF, right? मतलब A, C, E and F. These are the SDGs. बाकी achieve universal primary education, reduce child mortality, ये सब क्या है? ये सब MDGs है. ठीक है. कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज एरियाज ऑफ रेन फॉरेस्ट विल अफेक्ट. अगर बड़े पैमाने में बड़ी जगह पे जो पेड़ है वो अगर कट किए जाए तो उस पे उससे रेन फॉरेस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? रेनफॉल डिक्रीज इंक्रीज होगा, रेनफॉल डिक्रीज होगा, विंड स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. ऐसे तो सारे ऑप्शंस रिलीवेंट है, बट मोस्ट रिलीवेंट क्या हो सकता है? इंस्टेंट इफेक्ट. Okay, so right answer is option B. Okay, that is decreases rainfall. Okay, when trees are cut down in forest, it removes or reduces the amount of transpiration, which means less rainfall in the area. Correct. So deforestation affect large areas of rainforest. Rainforest produce, store and filter the water, protecting soil from erosion, floods and droughts, right? So trees are very important for protection of our human being, for the good environment, right? Pollution free environment. So there should not be more cutting of trees, right? So it will may impact badly or worstly at the large area of the uh, rainforest, or we can say large area of the सिटी एज वेल. ओके, सो कहीं पे भी अगर पेड़ ज़्यादा होते हैं तो अगर वो पेड़ काट दिए जाते हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, वो सिटी हो, फॉरेस्ट हो, कहीं पे भी हो. ठीक है. विच वन इज नॉट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द इन्वायरमेंट? ठीक है. निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. चलो बताओ. Countdown has started.
ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाटर रिसाइकलिंग। ठीक है, ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। Extraction of minerals and metals from earth is called agriculture, transportation, mining और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताओ, अगर ज़मीन में से कुछ मिनरल्स या मेटल्स निकाले जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, खनन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? चलो फटाफट आंसर दो, कोई आंसर नहीं दे रहा है। 13 का सी, सी, सी। Okay, so right answer is option C, that is mining. Okay, mining is the process where excavation is take place, and the minerals and metals and all the things, required things, are uh, extracted, or we can say excavated from the earth. Which one of the following is not the effect of transportation? इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का इफेक्ट नहीं है? एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉग एंड क्लाइमेट चेंज, acid mine drainage, or noise pollution. So which one of the following is not the negative impact, or we can say effect of transportation? Countdown has already ended. चलो फटाफट बताओ सब। Okay, so right answer is option C, that is acid mine drainage. Okay, acid mine drainage AMD is runoff formed at exposure of exposed rock containing sulfur minerals that react with water and air to produce sulfuric acid and dissolved iron, right? So this is this process, this mixture, all the mixture is called AMD, acid mine drainage. This acidic runoff dissolves heavy metals including copper, lead, mercury that pollute ground and surface water. Okay, तो ये जो हार्मफुल हेवी मेटल्स हैं, कॉपर जैसे कि लीड है, मर्क्यूरी है ना, they can pollute ground and surface water, understood, due to this acidic runoff. Which of the following greenhouse gases is entirely produced by human activities? entirely पूछा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। entirely, पूरी तरह से 100%, ठीक है, मतलब ये 100% ह्यूमंस का है और इसमें किसी का हाथ नहीं है, समझ में? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसे इंसान के अलावा कोई नहीं बना सकता। चलो बताओ। Okay, so right answer is option D, that is chlorofluorocarbon. Okay, chlorofluorocarbon is the gas which is used in refrigerators, AC, right, or deodorants as well,
सो ये जो गैस होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है. It is also a component, or we can say the factor which is responsible for the ozone depletion, right? So this is one of them, and which is entirely made by the humans. It is artificial gas. It is not natural gas. See here, the big explanation of all the four options. Methane. Where is this? Huh. Methane is emitted from variety of anthropogenic human induced and natural resources. Anthropogenic emission sources include landfills, oil and natural gas system, agricultural activities, coal mining, stationary, mobile combustion, wastewater treatment, and some industrial processes. Right. So methane can come from these activities, these emissions, these landfills. Right. So these are the sources of methane. Understood? There are both natural and anthropogenic sources of कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. राइट. तो यहाँ पे मैनमेड भी है और नेचुरल भी है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट entirely made by human. Understood? It is also a natural gas. Natural sources include decomposition, ocean discharge, and respiration. Human source come from cement production, deforestation, and burning of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. Right. So this is all about the carbon dioxide, which is not entirely made by humans, which is also made by the nature. Nitrous oxide is emitted from wastewater, contains nitrogen based organic matter such as that found in human and animal waste. Right. Factors influencing the amount of nitrous oxide produced by wastewater includes include temperature, acidity, biochemical, oxygen demand, and nitrogen concentration. Right. The most common sources of CFCs, carbon chlorofluorocarbons, are refrigerant, aircraft, fire extinguishers. For aerosols also emit CFCs into the atmosphere. Okay. So most relevant answer was option D, that is chlorofluorocarbon. Next, the level of sound during the normal conversation. अब जब नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, तब जो आवाज़ होती है बात करने की, है ना, वो नॉर्मल लेवल कौन सी होती है? 20 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल और 80 डेसिबल. चलो फटाफट आंसर दो इसका. Okay, so right answer is option C, that is 60 decibel. Sound is measured in decibel, right? A whisper is about 30 decibel. A normal conversation is about 60 decibel. Motorcycle engine is 95 decibel. Prolonged exposure to noise above 70 decibel can damage your hearing. Loud noise above 120 decibel can cause immediate damage to your ears. The process of burning municipal solid waste under sustainable temperature and conditions in a specific furnace is called. ठीक है. क्या किया जाता है यहाँ पे? म्यूनसिपल सॉलिड्स जो वेस्ट है उसे जलाया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर पे. ठीक है. और कुछ कंडीशंस में उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लैंडफिल, इंजनरेशन, रिसाइकलिंग और वर्मी कंपोस्टिंग. बताओ. काउंटडाउन हैज स्टार्टेड. चलो बताओ फटाफट. What should be the correct answer of this question? 17th question.
Okay, so right answer is option B, that is incineration. ठीक है. See, landfill refers to disposal of waste material by burying it and typically by filling and reclaiming excavated pits. ठीक है, उसे लैंडफिल कहा जाता है. ज़मीन में गाड़ देना, ज़मीन में भर देना, ये लैंडफिल होता है. इंसिनरेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, स्पेशली वेस्ट बाय बर्निंग. ना, वहाँ पे वेस्ट जो होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होगा या फिर कोई भी वेस्ट होगा, उसे जलाया जाता है. रिसाइकलिंग, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रिसाइक्लेबल मटेरियल. जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे यूज़ किया जाता है, उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसे हम फिर से यूज़ कर सकें, उसे बोलते हैं रिसाइकलिंग. वर्मी कंपोस्टिंग इज द यूज ऑफ अर्थ वर्म्स टू कन्वर्ट वर्मी कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट. राइट. वर्मी कंपोस्टिंग मतलब यहाँ पे वर्म्स जो है उसे यूज़ किया जाता है एज अ ऑर्गेनिक, सॉरी, एज अ कंपोस्टिंग ही जिसे बोलते हैं, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट. इसमें से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, ऐसा पूछा है. एनिमल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट और हाउस होल्ड वेस्ट. तो इसमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, ऐसा पूछा है. ठीक है. क्या हो सकता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. हाउस होल्ड वेस्ट जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, जिसमें एनिमल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, ये तीनों को भी कंसिडर किया जाता है एज अ बायोमेडिकल वेस्ट. राइट. सो हाउस होल्ड वेस्ट इज नॉट कंसिडर एज अ बायोमेडिकल वेस्ट. ओके. Biomedical waste is a waste containing infectious or potentially infectious materials. Understand? It may also include waste related to the generation of biomedical waste of medical or laboratory origin. Example: packaging, unused bandages, infusion kits, etc. Then biological waste can be solid or liquid. Examples of infectious waste include discarded blood, sharps, unwanted microbiological deposits, identifiable body parts, other human और एनिमल टिश्यूज. तो ये सब होता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट. ठीक है. चलो आगे बढ़े. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या है. क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हैवी व्हीकल्स. ओनली वन एंड टू, वन टू एंड थ्री, ओनली वन एंड थ्री, या फिर ओनली टू एंड थ्री. बताओ. टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट. चलो फटाफट दो आंसर. ऑप्शन टू, वन टू एंड थ्री, ऑल. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज आर दी कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन. इसमें से कोई भी अलग नहीं है. ठीक है. समझ में आया. यस. व्हाट कॉजेस मीनामाटा डिजीज. मीनामाटा डिजीज क्या है ये पता होना चाहिए, है ना. लीड, मर्क्यूरी, मैग्नीशियम और मिथाइल क्लोराइड. चलो बताओ. मीनामाटा डिजीज which was related to the big disaster in the Japan, Minamata.
where the lead emission was taken place, right? And multiple lives has been gone, right? Sorry, mercury is the correct answer, not lead. So mercury, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो क्योंकि ये करंट से भी आ सकता है, राइट. मीनामाटा डिजीज इज न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज्ड बाय सीवियर मर्क्यूरी पॉइजनिंग. Okay. Minamata disease was first identified in 1956 in the city of Minamata, Japan. Right? It was caused by a release of methyl mercury into industrial wastewater from chemical plant owned by Chiso Corporation that operated from 1932 to 1968. समझ में आया. सो मीनामाटा डिजीज जो है, इट वॉज द नेम ऑफ दिस डिजीज वॉज टेकन बाय द सिटी नेम ऑफ मीनामाटा जापान, and it was caused because of the industrial wastewater, okay, releasing the industrial wastewater into the chemical from the chemical plant owned by this company Chiso Corporation, right? So this is all about the Minamata. Okay, so this is the end of this session. Okay, I hope you have understood multiple questions, multiple things today, and we have learned many things, right? In the next session we will be discussing the Mahamarathon or the multiple questions, important questions about uh, on the unit 8, that is ICT. Okay, so be prepared for that. Now the time has arrived. Share your score in the comment box. चलो फटाफट अपना स्कोर शेयर करो. चलो सब लोग भाग गए स्कोर शेयर करने से पहले. कोई बात नहीं, चलो बाय बाय.